हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई हो रही है या मस्ती मस्ती होती है पूरे दिन? अच्छा, पढ़ाई भी होती है तब तो वेरी गुड. सो टुडे इन दिस मॉड्यूल वी विल नो अबाउट अदर पंक्चुएशन मार्क जो हमने लास्ट वीडियो में नहीं पढ़ा था. वी ऑलरेडी नो कि पंक्चुएशन मार्क डिफरेंट होते हैं, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल लेटर और क्वेश्चन मार्क. कैपिटल लेटर के बारे में तो हम डिटेल में जान ही चुके हैं. एंड टुडे वी विल नो अबाउट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड कॉमा. लेट्स नो अबाउट देम वन बाय वन. नंबर 1, full stop. We use full stop at the end of a sentence. फुल स्टॉप का यूज हम करते हैं किसी भी सेंटेंस के एंड में, जैसे राम went to buy fruits. किड्स, यहाँ पर सेंटेंस का एंड हो गया है तो हम लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे. नंबर 2, क्वेश्चन मार्क. वी यूज क्वेश्चन मार्क एट एंड ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन मार्क का यूज हम किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में करते हैं, जैसे who are you, what do you like. नंबर 3, अब बारी है कॉमा. कॉमा, we add comma between two things of the same kind. जैसे अगर एक ही सेंटेंस में आपको एक ही काइंड की 3 या मोर देन 3 थिंग्स मिले तो हम कॉमा का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम bought मैंगो, बनाना, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स. किड्स, यहाँ पर मैंगो, बनाना, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स ये सभी फ्रूट्स के लिए हैं, तो we will add commas after mango and then after banana. Now, rules are completed, so we will check ourselves by some sentences to punctuate. Number 1, trees give us fruits and wood. So, यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है? Yes, बिल्कुल सही. हम सबसे पहले T को कैपिटल करेंगे एंड देन वी विल ऐड फुल स्टॉप एट द लास्ट. नंबर 2, डू यू वांट टू लाई अंडर ट्री? हियर आल्सो वी विल राइट D with capital. एनी सेंटेंस है या क्वेश्चन? करेक्ट, इट इज क्वेश्चन. सो वी विल ऐड क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट. नंबर 3, my mother likes apples, mangoes and oranges. My का M हम कैपिटल करेंगे एंड एप्पल्स, मैंगोज के बीच में कॉमा ऐड करेंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे. टुडे आई मेट माय फ्रेंड. राइट T of today with capital and then I भी हम कैपिटल ही लिखेंगे. Did I miss something? अरे हाँ, हमने तो फुल स्टॉप ऐड ही नहीं किया, तो हम ऐड करेंगे फुल स्टॉप एट लास्ट. नाउ नंबर 5, I wish I could fly. Students, I have told you to write I with capital always. So हम दोनों I को कैपिटल करेंगे एंड फुल स्टॉप ऐड करेंगे. Now it's practice time. Let's see the homework. Number 1, the boy plucked apples. Number 2, what do you need? Number 3, trees are very useful. Number 4, do you help others? Number 5, trees gives us boost. Now students, I hope you have understood the topic very well and अब आप ये sentence beautifully write कर सकते. So see you again in the next video. Bye.